Freedom from fear is the freedom I claim for you, my motherland. Fear, the phantom demon shaped by your own distorted dreams. So goes the famous lines of Rabindranath Tagore. But under the present circumstances, we are all gripped by fear. Good morning, Shubh Prabhat, Vande Mataram. The COVID-19 pandemic may shut us behind doors, lead to social distancing, but it cannot crush our undeterred spirit to celebrate the hard-earned freedom for our motherland. Standing in this solemn, bright, and propitious morning to celebrate the 74th Independence Day, we have had experienced 73 years of freedom, democracy, and self-governance. Despite acknowledging this fact, we still have a larger vision for our India that is yet to be accomplished. Commemorating the selfless sacrifices made by thousands of our freedom fighters, starting from Gandhiji to Subhash Chandra Bose, Bal Gangadhar Tilak, to name a few from the millions in the galaxy. It's now time for us, the people of New India, to join the legion of the brave hearts like our frontline warriors, our soldiers, who are exposed to equally vulnerable conditions, but relentlessly strive to uphold the dignity of our motherland and safeguard their countrymen. Amidst such a noxious pandemic too, we, the people of India, as we celebrate the 74th Independence Day, must strongly resolve to prove ourselves as a nation that stands united, vanquishing every challenge and rising above every prejudice to help one another, as was dreamt of by another inspiring and true son of the soil, poet laureate Rabindranath Tagore, of a utopian India, so that we can celebrate this 15th day of August in the thousands of years to come. May we think of freedom not as a right to do as we please, but as an opportunity to do what is right. Let us practice an attitude of obdurate refusal to stop before achieving the desired goal, not limited to ourselves, but promoted to the greater good of our country. Let the fierce rebellions and the violent and chaotic history of the true martyrs not be silhouetted by our ignorance and indifference towards our national duty. On this day, let us remember what a great patriot Subhash Chandra Bose had said. Forget not that the grossest crime is to compromise with justice, with injustice and wrong. Remember the eternal law. You must give if you want to get. So, hoping to celebrate a meaningful Independence Day, we are glad and privileged to invite our chief guest, Sister Maria Diksha, our newly appointed principal, to proceed towards the flagstaff, escorted by the guards of honor, and hoist the national flag. Sister Maria is a person of great renown. She is gentle, cooperative, and considerate. She is proficient and is known for her creative ideas and holds a dignified personality. Sister Maria was born in Mangalore, completed her higher secondary studies in Lady Hill Victoria School, Mangalore, run by the Apostolic Carmel Sisters. In 1994, she joined the Apostolic Carmel and came to Kharagpur. After the religious training, she completed her graduation and post-graduation in English
from Burdwan University. While doing her studies, she was involved in youth ministry. She completed her B.Ed from Patna Women's College, which is run by the Apostolic Carmel. She has been a great teacher and educator too. Sister Diksha taught in Carmel School, Durgapur, St. John Mary Vianney School, Putra, and Carmel School, Port Blair. In 2009, she was appointed as the principal of Carmel School, Port Blair. In 2009, she was appointed as the principal of Carmel School, where she rendered her service for 2 years. And then she was transferred to Carmel School, Rourkela. Then she devoted 8 years of her valuable service as a principal. We now request our Honorable Chief Guest, Sister Maria Diksha, to kindly hoist the national flag. May we now request Sister Diksha to address our beloved students watching the program at home and the dedicated teachers of St. Agnes who have gathered here today. William Ralph Emerson, in his poem, A Nation's Strength, asks, what makes a nation's pillars high and its foundations strong? The answer does not lie in gold, sword, or in pride, but in brave men and women who work while others sleep, who dare while others fly. They built a nation's pillars deep and lift them to the sky. My dear sisters, teachers, parents, and students, greetings on the occasion of Independence Day. We do miss your presence, dear students. We celebrate Independence Day as the National Festival of India. Freedom fighters struggled to make our country free from Britishers. In addition, they were the ones who sacrificed their lives for the country. On this day, every citizen of our country pays tribute to them, and it is indeed our duty to do so. We are celebrating our freedom today,
which we gained 73 years ago. But are we truly free? We are bound with many chains. If we glance at our life in the past few months, we will understand very well what freedom is not. Our moments were and are restricted. Our economy has come down. Our people are stranded. There are many who have lost their dear ones, their jobs, just because of a single virus. But the same virus has given us opportunity to see life in a different angle, to be satisfied with what we have. It also gave us the realization that if we want to build our nation, we must first make our homes. It has brought us together. People have become more generous towards one another. We realize that running with a fast-changing world is not everything, but we need to sit back and reflect on the quality of our race. As we gratefully salute those heroes who fought to bring freedom for us, let us not forget the present heroes, our frontier warriors, who try to elevate the suffering of people and help others to lead their normal life by risking their own. We also see many generous people coming forward to help those in need. Let us enkindle in us the patriotism and work for the betterment of our neighbor. We teachers have a double role to cultivate this patriotism in our students. Thus we contribute our might in building up of our nation. Together with our great poet of Bengal, Rabindranath Tagore, let us say, into that heaven of freedom, my father, let my country awake. Jai Hind. Thank you, sister, for your inspiring words. Let us now unite our voices in a sincere prayer for a bereaving motherland as thousands of children are becoming susceptible to COVID-19 every day. Let us pray to the Almighty for the restoration of the normal, happy, and hopeful days. Blessed is the nation whose God is the Lord. Psalm 33, verse 12. Eternal God, stir our minds and stimulate our hearts with a high sense of patriotism as we celebrate the Independence Day. May all that this day symbolizes renew our faith in freedom, our devotion to democracy, and redouble our efforts to keep a government of the people, by the people, and for the people, truly alive in our world. Grant that we may highly resolve on this great day to dedicate ourselves anew to the task of ushering in an era when goodwill shall live in the hearts of a free people. Justice shall be the light to guide their feet, and peace shall be the goal of humankind. To the glory of your holy name and the good of our nation. We humbly beseech you, Lord, to wipe away the virus that is fast spreading and spare your people. We make this prayer in your holy name. Amen.
We now conclude our program with a short vote of thanks by Sister Ibahul. First of all, I express my most sincere thanks to the Lord God Almighty for giving us this bright and beautiful day, and His blessings of good health to all of us present here today. Without much ado, I would like to place on record my hearty thanks to Sister Diksha, our principal, and some responsible teachers who carefully and thoughtfully planned how to celebrate the 74th anniversary of India's Independence Day. My sincere thanks to Cedric Sir and his team for gracefully leading the flag hoisting ceremony, Anuradha Miss for comparing today's event, Richard Sir and the choir for the heartwarming song, Rudra Sir and Abdul Sir for their soulful dance performance, the teachers Jayanti Miss and Hriday Miss for their motivational speeches, and Meghna, the school pupil leader, for sharing her views on nation building. Yes, although we could not witness everything virtually now, but as the saying goes, the best comes at the end. And just to remind you that the ignition reel is still rolling. It actually started rolling weeks ago. Therefore, I also express my gratitude to Arnab Sir, who started putting together all the scenes and voices to get a complete picture of today's celebration in a meaningful way. And now, my heartfelt thanks to all our support staff who have also contributed their might in big and small ways to make this celebration a success. Once again, thank you, dear sisters and teachers, for your willingness and involvement to make this day a beautiful one. We thank you for being with us this time. It has been a great pleasure. Thank you very much. Lord, we pray for golden peace, peace all over the land. Let us dwell in liberty.
Greetings everyone, this is Meghna Adhikari, School Pupil Leader 2020 St. Agnes School, and in short I would like to remind each and every viewer of the importance of an event like Independence Day. Residing in a country like India where unity is the prime need of the hour, Independence Day is a very significant event. It is one of those extremely few occasions where people come together to celebrate it solely as Indians. Whenever we celebrate Independence Day, in whatever way possible, we take out some time from our extremely busy schedules to honor the innumerable sacrifices that have been made for us by our founding fathers. In my opinion, a strong nation is one which is never afraid of struggle. Be it India in the 20th century or the 21st century, the population has never been afraid of struggle. It has always strived to achieve a better societal environment. And in the 20th century, 100 years back, we were fighting and struggling to break free from colonialism, and a century later we are still in the battlefield, but this time we are fighting a global pandemic. But they say history repeats itself. Thus, I firmly believe that we will overcome this situation, we will solve this problem, and we will come back stronger. But as we pay tribute to those brave souls who laid out the foundation of the world's largest democracy, let us also honor and remember those frontline workers of this pandemic who are laying down their precious lives to save ours. And Independence Day isn't just an event in which we honor our ancestors and their sacrifices. It is an event which is like a reminder to us to do something worthy of the independence that we have been gifted with. Thank you. Jai Hind. स्कूल खड़गपुर की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पूरा विश्व इस कोरोना बीमारी की वजह से जूझ रहा है, परेशान है और अपने अपने घरों में बंद है या कैद है। जश्न आज़ादी का है तो ऐसी परिस्थिति में कैद रहना, अपने घरों में रहना, ये सुन करके ही बड़ा अजीब लगता है, किंतु क्या करें। जैसा कि कहा गया है, सब दिन होत न एक समान, अर्थात हर दिन एक जैसे नहीं होते हैं, हमेशा दिन बदलते रहते हैं। ईश्वर ने इस बार समय बदल दिया, जिसकी वजह से आज सभी अपने अपने घरों में बंद हैं। खैर, परिस्थितियाँ जैसी भी हो, चूँकि जश्न आज़ादी का है, अतः हम सभी अपने अपने घरों में ही सही मन से तो कम से कम इस जश्न को मना ही सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं। अतः इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस में विद्यार्थियों की कमी, खास करके विद्यार्थियों की किलकारियों की कमी, उनकी मनमोहक जो आवाज़ होती है और उनके जो खास करके सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, इन सब की कमी तो जरूर खलेगी, किंतु क्या किया जाए। अगर स्थितियाँ ऐसी ही हैं तो हमें आगे तो बढ़ना ही होगा। इसलिए इस वर्ष विद्यालय के हम शिक्षकों ने ये तय किया कि हम लोग अपनी तरफ से एक प्रयास करेंगे और सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए एक छोटा सा गीत प्रस्तुत करेंगे आज़ादी के लिए। तो आप सभी अपने घरों में स्वस्थ रहिए, निश्चिंत रहिए और आज़ादी को मनाइए। इसी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद। मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। वतन जाने मन जाने मन जाने मन। वतन 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 जाने मन जाने मन जाने मन।
बने तेरे मेरे ये बदन, इसकी धरती तेरे मेरे वास्ते गगन। इसने ही सिखाया हमको जीने का चलन, जीने का चलन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन, मेरा मन। वतन है वतन है वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। वतन है वतन है वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। अपने इस चमन को स्वर्ग हम बनाएंगे, कोना कोना अपने देश का सजाएंगे। जश्न होगा जिंदगी का, होंगे सब मगन, होंगे सब मगन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन, मेरा मन। वतन है वतन है वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। वतन है वतन है वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन, मेरा मन। এই দেশ আমার জননী, ভালোবাসি তাই এই মাকে। নিশিদিন এ মাটি আমায় স্নেহ আর আদরে যে ডাকে। হ্যাঁ, আজ এই মাকেই আমাদের শ্রদ্ধা জানাবার, ভালোবাসা জ্ঞাপন করার দিন। আজ আমাদের স্বাধীনতা দিবস, অর্থাৎ 15ই আগস্ট। 1947 সালের 15ই আগস্ট এই দিনটি ভারতের ইতিহাসে এবং ভারতবাসীর কাছে চরম মর্যাদার এবং গৌরবের দিন। যদিও এই ইতিহাস সকল ভারতবাসীর কাছেই অজানা নয়, তাই সেই ইতিহাস পর্যালোচনা না করে বর্তমান পরিস্থিতিতে সেই বীরভোগ্যা ভারতবীর ভারতমাতার সন্তানেরা যে আন্দোলন এবং আত্মোৎসর্গ করে এই স্বাধীনতা এনেছিলেন, তার মর্যাদা বর্তমানে আমরা কতটা রক্ষা করতে পেরেছি সে কথা যদি একবার বিবেচনা করে দেখি, তাহলে দেখব অনেকাংশেই তা ক্ষুণ্ণ হতে চলেছে। আমরা অনেকাংশেই আজ অসহিষ্ণু, আমাদের ভাবনা চিন্তা স্বার্থান্বেষী, চারিদিকে নানা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। তাই একবিংশ শতাব্দীর ৭৪তম স্বাধীনতা দিবসে আমাদের ভারতের নাগরিক হিসেবে ব্রতী হওয়া উচিত এই নানা সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করা এবং ভারতবর্ষকে আবার সেই জগৎ সভার শ্রেষ্ঠ আসনে প্রতিষ্ঠা করা। তাই আমরা আজ অঙ্গীকারবদ্ধ হব ভারতের সেই স্বাধীনতার যথার্থ মূল্যায়ন করতে এবং নিজেদের নানা সমস্যা থেকে দূর করে ভারতের স্বাধীন নাগরিক হিসেবে ভারতকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে মর্যাদায় গড়ে তুলতে এবং সম্মানিত করতে। এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম। वंदे मातरम। सुप्रभात। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना। आदरणीय प्रधानाचार्य सिस्टर मारिया दीक्षा एसी, शिक्षक गण, विद्यार्थी गण एवं मेरे प्यारे देशवासियों,
आज हम 15 अगस्त की प्रातः बेला में अपने स्वतंत्र देश की 74वीं स्वतंत्रता दिवस समारोह का आनंद मना रहे हैं। आज ही के दिन 1947 को हमने संयुक्त राष्ट्र से भारतीय संविधान सभा को विधायी संप्रभुता दिलवाई थी। यद्यपि सुनने में यह जितना सरल लगता है, तथापि इसकी कीमत का आकलन सरल नहीं। 1857 में प्रारंभ हुए आज़ादी की क्रांति में झांसी की रानी मंगल पांडे से लेकर चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, वल्लभ भाई पटेल, खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस की कुर्बानियों को हम भुला नहीं सकते। गांधी जी के सत्य अहिंसा, करो या मरो असहयोग आंदोलन ने हमारी क्रांति को जागृत रखने में महत्वपूर्ण सहयोग दिया। आज़ादी सदैव कुर्बानी लेती है और असंख्य शहीदों के दृढ़ संकल्प एवं आज़ाद भारत का सपना एक दिन साकार होकर हमें स्वतंत्रता दिवस के रूप में प्राप्त हुई। अतः आज के शुभ पावन पर्व के अवसर पर हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों को स्मरण करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उन्हें कोटिशा नमन करते हैं। आज स्वर्णिम दिवस के अवसर पर दृढ़ संकल्प लें कि हम आज़ाद भारत की आज़ादी को सुरक्षित रखेंगे और इसे सुरक्षित रखने के लिए यदि हमें कुर्बानी भी देनी पड़ी तो हम पीछे नहीं हटेंगे। विषम परिस्थितियों में भी आज भारतवासी अपनी जिम्मेदारियों को भली भांति निभा रहा है। चाहे सीमा पर रक्षक हों या सामाजिक क्षेत्र में महामारी से लड़ने वाले स्वयं सेवक, हम कभी निराश नहीं होते। देश की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सीमांत की समस्याएं हमारे सामने चुनौतियां पैदा कर रही हैं। हमें इनसे घबराकर कमज़ोर बनने की ज़रूरत नहीं, अपितु आशान्वित होकर इनका सामना करना होगा। उपहार स्वरूप प्राप्त आज़ादी की कीमत को बनाए रखने हेतु अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा और देश ने क्या दिया यह सोचने के स्थान पर हमने देश को क्या दिया यह विचारें। यदि स्वतंत्रता चाहिए तो देश की अखंडता को बनाए रखना होगा। बंद हाथ की मुट्ठी की तरह अपनी एकता एवं सुदृढ़ता का परिचय देना होगा, तभी मानवता सुरक्षित रहेगी, जीवित रहेगी। आज हम अपने घरों में कैद हैं, परंतु हमारे विचार एवं भावनाएं निर्बंध है। अतः आज हम अपने सुविचारों और सुभावनाओं द्वारा देश की स्वतंत्रता एवं अखंडता को बनाए रखने का संकल्प लें। इन्हीं सुविचारों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। जय 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 हो जय 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 जय। फिर से शहरों में रौनक आएगी, फिर से गाँव में लौटेगी हंसी, फिर से साथ सारे यार होंगे। ना होगी पाबंदी, ना रोक ही कोई, फिर से सड़कों पे सब नाचेंगे, पटरी पे पहिए भागेंगे, गूंजेंगे खेलों के मैदान, बांटेंगे हम खुशियां, गम भी हम मिलकर